الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. شہنشین پر تشریف فرما عالی جناب محمد علی شبیر صاحب، ایڈوائزر ایس سی ایس ٹی او بی سی مائنارٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف تلنگانہ، عالی جناب نواب محبوب عالم خان صاحب، عالی جناب غوث صاحب، عالی جناب مجاہد عالم خان صاحب، عالی جناب شاہ عالم صاحب، عالی جناب ظفر جاوید صاحب، other chairmen, secretaries and correspondents of various educational institutions, faculty members, ladies and gentlemen, at the outset, on behalf of the management of Anwalum Educational Association, I would like to extend a warm welcome to all of you, especially the advisor to the government of Telangana, that despite his busy schedule, he accepted our invitation and agreed to share his views in this interactive session, which deals with some very, very important issues pertaining to the education sector of government of Telangana. My dear friends, you are aware of the fact that the Constitution of India under Chapter 3 has a special provision known as the fundamental rights. These fundamental rights are different from ordinary rights. They are very special and they are protected. Even the legislature or the executive cannot interfere or violate these rules. They are sacrosanct. Article 31 of the Constitution of India under fundamental rights guarantees certain special rights and powers to minorities in India to establish and administer educational institutions of their choice. The words establish and administers have been amply clarified by various high courts and Supreme Court of India, especially in famous TMA Pai case, what are the rights and duties of minority educational institutions. Despite this clear mention in the Constitution and various court explanations, the political leaders, the government, the executive officers, and the university authorities fail to understand these laws and regularly they interfere with the functioning of the minority educational institutions. One such important issue was the introduction of the scheme of DOST. Under this scheme, all the colleges were brought under one umbrella. So if all the colleges are there in this scheme, minority educational institutions will lose the right to admit the candidates of their own community and choice, because it is open to one and all. So this is a clear violation of the
fundamental right and TMA Pice case. Then the regulatory body for professional courses in India is the All India Council for Technical Education. In India, Indian Constitution clearly lays out that both state and central government do have a right to make law on the education. But when there is a conflict between the two, the central law will prevail. So when the central government body, the AICTE, sanctions some additional seats and courses, again the state government stops it, which is again a clear violation of law. So in the previous government, you are all aware that all the minority professional colleges, barring a few, were closed because of the harassment by the then existing government. And you are all aware that how Nawab Mahbub Alam Khan Sahab took up this cause of the minority educational institutions, not only fighting the TMA Pi case, but openly challenged the then existing government and appealed to the people of Telangana to make right choices in the elections, and the results are known to you. So, after the formation of the new government, again this Dost scheme came up. Then Nawab Sahab and the others made a representation to Honorable Advisor Sir. Advisor Sir understood the issue. He talked to the Chief Minister of the state of Telangana, and we are extremely thankful to both of them that they have understood the law and exempted the minority educational institution, thus saved the rights of the minority students. Otherwise, for example, in Anwar College, 99% minority students take admission. If those scheme was there, maybe it would have gone to 40 or 50%. So minority students would have been deprived of their rights. Similarly, nowadays, education is the only source of empowerment of an individual, community or nation, and especially the professional education. Now the AICTE has made the right policy that they are not stopping any institute from opening new courses or increase in intake. Again, the state governments have not understood that policy. So, sir, we are again thankful to Advisor Sir that he used his best offices and got that sanction from the state government that minority educational institution should be given the right to increase in intake in professional courses. Janab Muhammad Ali Shafir Sahab and all my respected friends who are present over here. As is apparent, today we are trying to facilitate Muhammad Ali Shafir, advisor to the government of Telangana, minorities, SCs, STs, OBCs and all. In fact, all the weaker sections he represents. So, you are all aware that rightly or wrongly, in every policy and at every time, with every government, the minorities have suffered. Their institutions have suffered. The rights have been misused. You know it. I know it. People who are not minorities, they start institutions, try to take advantage of Article 31, which is specific only to the linguistic and religious minorities. This cannot be expected. I was just saying that Mr. Mallareddy, now the very famous educationist, he was the person who started one Christian college. What right has he got? What right has he got? And he was blessed by the government with a ministership. Handed over a
university, which I would represent to the Telangana government, that all these institutions should be inquired into. We know it, you see, when the inspection of our institutions take place. This KCR government, Professor Ramna, you're sitting here, even for apparatus of such 50 rupees, our colleges were stuck up. Is it a fact or not? We suffered. Despite the fact that I was with him for 12 long years in the course of Telangana movement, he did not allow my institutions. All my institutions were shut out. I did not go to him. उसके दर पे जाके मैं मुसलमानों की इज्जत का नीलाम नहीं किया. I did not sell my self-respect at his place. We went to Supreme Court. This boy sitting next to me, he was part of our fight. So many others were part of the fight. We fought it and we got the order ended by the Honorable Supreme Court. It was our right. This government, I say very clearly, ये अखिलियतों की वजह से यह गवर्नमेंट आई, मुसलमानों के वोटों पे. No doubt about it. I took up the issue. खुला आम में खड़े रह के बोला कि केसीआर को वोट मत डालो, कांग्रेस को वोट डालो. उस वक्त कई लोग डरे, बोले अगर केसीआर जीत गया तो. जंग में हार और जीत लगी हुई है. जो शख्स मौत से डरता है वो लड़ना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठे. और मैंने क्या किया, केसीआर की गलाजत को एक्सपोज किया. और आप देखिए, ये हकीकत है कि केसीआर तेलंगाना की जंग के अंदर अगर मुसलमान साथ नहीं देता तो तेलंगाना नहीं बनता. तेलंगाना बना, मुसलमान ने मुत्तहिद होकर उसका साथ दिया. लेकिन उस शख्स ने क्या किया, उसके चीफ मिनिस्टर बनने के साथ साथ फौरन 3-4-5 महीने के अंदर सबसे पहले 5 मुसलमानों को आलेर का सबक किया. आलेर एनकाउंटर, ये फैक्ट है. 55 मुस्लिम स्कूल को जो है खत्म कर दिया गया, कॉलेजेस. ये फैक्ट है बिल्कुल, यू कांट डिनाई इट. और इतना हैरेसमेंट किया गया. दोज कनेक्टेड विद JNTU will, I will just request them, if I am speaking something untruth, please stand up and stop. Even for an apparatus, 50 रुपए के apparatus के लिए पूरे कॉलेजेस को बंद किया गया. This is a fact. माइनॉरिटी राइट का मिसयूज जब भी हुआ, आज भी हो रहा है. Against this, we minorities, genuine minorities, must step up, stand up, fight for our rights, and tell this government through our advisor that a law is, we require a law that will bar non-minorities from using the rights of minorities. This is something which we require. This protection is required. Just imagine that one single institution, all the institutions run by Mr. Mallaredi, they have demanded an increase of 3,000 seats in computer science. So this Mallaredi wants 3,000 seats. So what will all the colleges do? Should they exist or they should not exist? And the ratio of teaching staff is, you know it, I know it, 1:20. For 3,000 seats, how many professors and what are the other the teaching staff required? Does Telangana have that? The entire state of Telangana? Can you provide so many teaching staff to a single course? What the government has done by refusing is very correct. The government decision is totally backed by the Honorable Supreme Court decision. Supreme Court is clear. The consent of the state government is required.
One thing. The other aspect is, as far as we are concerned, we stand on a totally different footing. Our rights flow from Article 31, supported by the Act for Minority Commission for Minorities Institutional Education for Education. It's very clear. Chapter 3 of that Act is very, very clear as far as our rights are concerned. The government has given us 2 sections, given us a GO. We are thankful to them. We are thankful to them. And this matter must be brought to the notice of the court that these 2 sections per college flow from this act. The fulfillment of our rights. It's not gratis. Understand this? It's very necessary. Now the important aspect I turn around. Within 3 months of the taking over charge as the Chief Minister, Mr. Kesia, he slaughtered 5 Muslims in Agra encounter, which is now known notorious as the Agra encounter. Shut out of 55 colleges. This is the very fact. ये हकीकत है. इसको डिनाई नहीं कर सकते. Compare it with रेवंत रेड्डी. ये सब है हमको 2 सेक्शन दे दिया बगैर पूछे. कौन अच्छा है? ये अच्छा है, वो अच्छा है. खुली बात. I don't want to these words. We will support those who support us. Very clear. We supported Revant Reddy, he is supporting us. We are thankful and we are grateful. And we feel and we hope that this is not the end of the matter. We require the government support. Our money should be released. And I hope Mr. Sabir Ali, the advisor here, he is a senior person, very articulate in his attitude. A person who gets the work done. I am telling it, I have got experience. If you want to get the work done, Sabir is there. He is senior person. आप हमारे पैसे दिला दीजिए. हम लोग परेशान हैं, गुज़िश्ता 10 साल से हमारे पैसे नहीं मिले. In fact, the education sector, the government owes 6,500 crores. Without 6,500 crores, the non-minority colleges with fees ranging from a lakh rupees, 2 lakh rupees to 2 lakh, 2.5 lakh. Here the situation is different. We are poor. हमारी फीस 35,000 से 50,000, 60,000 तक 70,000 फिनिश. End of the matter. यहाँ हमारा सर्वाइवल आसान नहीं है. It's very difficult. सबसे पहली बात यह है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया और कामयाब रिप्रेजेंटेशन किया जिसकी वजह से हमारे सीट बढ़े. और हम वो इंस्टीट्यूशन है, हम फखर से कहते हैं अगर 100 सीट बढ़ते हैं तो हमारे पास 100 मुसलमान पढ़ते हैं. ये कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि 5 मुसलमान हो 25 हिंदू हो या 25 वो हो जो पैसे देते हो. वो नहीं है मामला. Our matter is very clear. The 2 sections which I got, everybody is invited to check it. 100% minority admission. I am proud of that. Nothing hanky-panky. If seats are remaining, then I will invite my non-minorities. No problem about it. Absolutely no problem. So I come to the conclusion, because the timing is running out, that our problems which we have represented, see, there is another very serious problem which I have represented to the Honorable Chief Minister. You were there. That is the admissions in undergraduate degree courses. Minorities are exempted by a Supreme Court order, clear order in Islamia Academy matter, that they cannot enforce it. No regulatory authority can enforce admissions as far as minority institutions are concerned for undergraduate posts, and the government has exempted us. But
There is a huge problem to that. When we represented the matter to the previous government, they also exempted us. But as a punitive step, they stopped the scholarship to all those students who took admissions in Muslim minority colleges. This punitive action must end. There cannot be any compromise. Our students are very poor, absolutely poor. मेरे सूफी कपड़ों से ये अंदाजा मत लगाओ कि मेरी कौम का हर आदमी सूफी कपड़े पहना हुआ है. हमारी मेजॉरिटी गरीब है. हमारी जिंदगी उन गरीबों के लिए वक्फ है. मेरी कौम के कोई शक और शुबा नहीं है. जिंदगी के तकरीबन 40 साल इन्हीं की खिदमत में गुजारा है और इस कौम की खातिर खड़े रह के लड़ा है, पीछे नहीं हटा है. और अल्लाह ताला का फजल है कि कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है. मैं तंबीर साहब, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद आप मेहरबानी करके एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि हम हमारे क्रिश्चियन सब भाई सारे लोग चल के उनका शुक्रिया अदा करें. हमारे प्रॉब्लम जो है आपको भी रिप्रेजेंट करें और उनके सामने डायरेक्टली रख दें. सबसे पहले ये बात है कि उन्होंने ये काम किया. इट इज बट नेचुरल that we must thank him and we want to do that. Thank you very much. Respected Shabir Ali Sir and other dignitaries who are seated on the dais, and my dear friends, good afternoon to each and every one of you. Having heard the Sir who spoke and completed just now, I don't think we need to add anything more to be said. However, as he was saying, the admission certainly is our right. We have been given right by the constitutions, and in spite of that, we are not allowed to admit our own students. And every year, we are running to the government asking for permission to admit our students. And even this year also, all the colleges suffered. And therefore, once again, along with all of you, I also would like to reiterate, kindly give us a permanent GO with regard to the exemption at the time of our admissions of our undergraduate students. And at the same time, as students who are coming to our colleges are poor, be it Muslim students, be it Christian students, they are not rich at all, and therefore we would like to certainly also get scholarship like anybody else who is being admitted by the government through DOST. DOST is admitting, and all those students get their scholarships. And we have a right to admit our students, and although we are exempted, still our students do not get their scholarships. And therefore, what happens ultimately, the numbers go down because our students are not able to get their scholarships, and therefore they do not want to come to the college, although we run our colleges very well. And from this point of view, I would like to once again ask our Shabir Ali Sir, kindly give us a permanent GO exempting us from at the time of our admissions, at the same time asking the government to give scholarships for our students. And we are extremely grateful, sir, for all the helps that they have given all these years, and particularly our Muslim friends who have been voicing their requests to the government, because of whom, of course, we are a very small minority. We also are able to get whatever we require from the government. And at this juncture, joining with our Muslim friends, I would like to make this request, namely, when we request you, kindly listen to us and take us wherever it's necessary in order to get our requests heard and also fulfilled. So with these words, I thank the organizers for calling us, and I hope that our meeting today will see not only a day of fruitful day, at the same time a satisfactory running of our institutions for the ordinary and the poor people of our own institutions. Thank you very much. Thank you, Father. Now I request Reverend K.V.K. Rao Sahab, who is in the forefront of fighting rights of the educational institutions. I wholeheartedly thank my friend philosopher Mehboob Aram Khan Saab for arranging this meeting and inviting Muhammad Shabir Ali Garu and all of us here to have a discussion on minority issues. Thank you very much, sir, once again. Sir,
For the last 10 years, from 2014 to 24, we, the educationists, never felt that we can state in the universities, government, AICT, or in the National Minorities Commission that we are minorities. That is a word which nobody wanted to listen. Sir, my friends were telling that so many minority colleges were closed. Why? I am putting a question to myself, why so many minority colleges were closed? Sir, I want to give a brief detail on this issue. Yes, for Constitution of India and also Society Act, two types of institutions are there: permissible institutions, impermissible institutions. Permissible institutions are those which are working with not-for-profit motto, established and administered as an occupation, means of livelihood, or mission in life, like altruist, when there is no element of profit generation. All the minority institutions which have closed, they belong to permissible category of not-for-profit institutions. They could not get any special privileges at the time of approval from the AICT, permission from the government, and affiliations from the universities, struggled a lot for getting even the minimum affiliations, leave about the increase of intake, autonomous status, etc., etc. Whereas the impermissible category of institutions, sir, I can state without any fear that all these private universities granted permission, all 5 private universities granted permission, as well all 7 private universities in the pipeline whose proposals were signed by the government. The Telangana government is going to pass an act granting permission to them. All are doing only commerce. Before converting in university, they are doing commerce. After conversion also, they are doing commerce. There are about 6 to 7 deemed universities working in the state of Telangana. All are doing commerce. There are about 45 to 46 non-minority autonomous colleges functioning in the state of Telangana. All are doing commerce. Commercialization and transferring the money to their private businesses, reinvesting part of the money in the education, spending money for earning more money, criminalization of education, money laundering, all these activities are going on, sir. I can prove beyond doubt whatever I am telling. I have evidences for all these colleges about their commercialization. Sir, I request the government to conduct a forensic audit. Sir, if you go to an education institution, first condition, the investment, all the investment should be a philanthropic contribution. Sir, you visit any of the private universities, sir, the investment, if you can calculate, it will be about 300 to 400 crores. If you go to their books, it will show only 20 crores, 30 crores, 40 crores. The balance amount, if we can conduct a forensic audit, we will definitely find out what is the real investment, what is the investment shown in the books. Why government don't want? Is it not the duty of the government to ensure that education should be not for profit? When commerce is going, and sir, the college chairmen are spending 100 crores contesting in the MP elections. Where is that money? How they got that money to spend 100 crores as an MP? This all looted money from the common man. I request, my first request, sir, because of the looting, commercialization, those colleges are flourishing because they get all facilities. If you have money, you can purchase private university status, you can purchase deemed university status, you can purchase DINOVA university status, you can purchase accreditation, you can purchase ranking. There is no limit. You can whatever you want, you can purchase. Because of the uncontrolled commercialization, the minority institutions are suffering. They have 90% of the colleges have been closed. So the only way of survival of this minority institution should be stop commercialization, control commercialization, conduct forensic audit, find out the culprits, close them, book criminal cases, then entire education system will be set right. Second, sir, during the last 10 years,
when we gone to the university, even for, you all know that minority institutions have got a constitutional right of establishment and administration. In the administration, there should not be any external influence. Governing body, there should not be any government nominee. Staff selection committee, there should not be any university nominee. Sir, for the last 10 years, we are compelled, forced to take governing body nominee from the government and university, to take subjects experts from the university to select our teachers, sir. This is humiliating. Sir, this is still pending, sir. My second request, sir, see that there should not be any external influence in the administration of minority institutions, sir. Third, sir, just now my friend was also referring, why 10%, additional 10% for EBC reservation is not given in minority institutions, sir? If it is a non-minority institution, if they have 100 seats, 100 plus 10, 110 seats will be put in the counseling. If it is a minority institution, only 100 seats. Why, sir? Why this discrimination? For seats which are in demand like BEd, computer science also, all non-minority institutions 10% more. For minority institutions only whatever permitted. Sir, this is also an issue which has to be looked into, sir. Sir, there are about 14, 15 universities, sir. Why not one university is given to Muslim minorities, sir? Why not one university is given to Christian minorities, sir? Can't we run? Are we not aware of the rules of how to run, administer a university? Sir, it is very easy to run a university than running a school, sir. Kindly, our request will be, there are about now, sir, till date, not even one, this should be the price, because there are more number of Muslim population in Hyderabad, sir. And to respect Hyderabad Muslims' pride, sir, at least, sir, you can take up the issue. See that there should be 2 to 3 Muslim universities and 1 Christian universities in this academic year 24-25, sir. One more issue, sir. Polytechnical admissions, sir. I have been seeing polytechnical admissions for the last 10 years, sir. If a non-minority institution, 100% seats will get reimbursement. If it is a minority institution, only 50% of seats will get reimbursement. Other 50% will not get reimbursement. Yes. Only the 50% allotted by the convener only are getting reimbursement. The 50% earmarked for the management to be filled with the concerned minorities, they are not getting reimbursement. We have been fighting this issue several times. We have given several representations, but we could not get it. Sir, there are several other issues, sir. There are so many people who are expected to speak, sir. As you suggested me, sir, I will come and submit you a detailed note, sir, requesting by including other requests of the minority communities also, sir. Sir, we thank the government of Telangana for creating an environment that is minority friendly environment in the state of Telangana. Janab Mehboob Alam Khan Sahab, advisor to government, मेरे दोस्त खदीम साथी मोहम्मद अली शबीर साहब, शाह आलम खान साहब, गौस साहब, मुजाहिद आलम खान साहब, मोअज़्ज़ीन जो तशरीफ़ फरमा है इस महफिल में, और मेरे सहाफ़ी दोस्त, सबसे पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे बात करना है. मैं काफ़ी रिलैक्स बैठा हुआ था यहाँ. मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ हुई आज जो महबूब आलम खान साहब ये जलसा मुनक़िद किए. सबसे पहला फरीज़ा यही होता है कि जो हमें मदद किए उसका शुक्र अदा करें, और एक बहुत बड़ी रस्म आप अदा किए, और हमारे रहनुमा मोहम्मद अली शबीर साहब, जिसको मैं आज पूरे 35 साल से जानता हूँ और 35 साल से साथ का काम कर रहा हूँ, इनके खिदमात, इनकी तबीयत, इनकी फितरत, हर चीज़ से जो है बखूब वाकिफ़ हूँ, क्योंकि शाना बाशाना कई लड़ाइयाँ आपके साथ लड़ा, कई लड़ाइयाँ महबूब आलम खान साहब के साथ बोले तो एक तरफ उधर नहीं, तो
کئی ریپرزنٹیشنز. ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلانا باضابطہ ایک جنگ کے لیے تیار ہوئے ویسی بات ہے. روز ایک نیا آبسٹیکل، ایک نیا ہرڈل آپ کے سامنے آتا ہے، اور پھر ہم سب ساتھ ہوتے تھے سوچ فکر میں کہ جو ہے اس کو کیا کریں. ابھی جس کو سنے آپ کے وی کے راؤ، یہ بہت زبردست لیگل مائنڈ ہے، انہوں راستہ بتاتے تھے اور جنگ ساتھ چلتی تھی. ایک 2014 سے 24 تک، یا پہلے 2004 سے 14 تک بات کریں گے، جہاں پر 2009 تک ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب ہمارے رہنما تھے. ان کے دور میں تعلیمی اداروں کو جتنا فائدہ ہوا، جتنی مدد حاصل ہوئی، میں نہیں سمجھتا کہ گزشتہ 30-40 سال سے جب محبوب عالم صاحب اور ہم ساتھ چل رہے تھے اتنی ہوئی. آپ کا ریزرویشن جو تھا پہلے 5% پھر 4% انہی کے دور میں ہوا. آج جو ری ایمبرسمنٹ مل رہا ہے اور بچے جو ہے پڑھ سک رہے ہیں قوم کے، وہ بھی انہی کے زمانے میں ہوا. شروع میں جو ہے پارشل ری ایمبرسمنٹ تھا، پورا ری ایمبرسمنٹ نہیں کرتی تھی گورنمنٹ، مگر ایک 2006 سے یعنی فل ری ایمبرسمنٹ کرنے لگی. نہ صرف فل فی ری ایمبرسمنٹ کرتی تھی بلکہ ٹل سیچوریشن کرتی تھی. یعنی اگر 1 لاکھ بچہ بھی ہے تو 1 لاکھ بچے کو جو ہے ری ایمبرسمنٹ ملتا تھا. جو لوگ پہلے اس دور سے پہلے ہم بہت قریب سے دیکھے کہ جو ہے لوگ اگر انجینئرنگ یا کوئی پروفیشنل کورس کرتے تھے تو ان کو جو ہے قرضے لینا پڑتا تھا. ان کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ یہ پروفیشنل کالج کا ایجوکیشن یہ لوگ پرسیو کریں. قرضے لے کے جو ہے پڑھتے تھے. مگر راجشیکھر ریڈی صاحب کا جو ہے، میں ان کے لیے دعا تو نہیں کر سکتا، مگر جو ہے ان کی دین تھی کہ غریب سے غریب بچہ پورا، یعنی سی بی آئی ٹی ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو جہاں پہ فیس 1,60,000 ہے، اس کو ایک دمڑی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بادشاہ بھائی آپ تعجب سے دیکھ رہے ہیں، غلط بول رہا ہوں. اور اس کے بعد میں 2014 میں جو ہے کے سی آر کا دور آیا. ہم وہ بھی دور دیکھے جب محبوب عالم خان صاحب کے سی آر کے کافی قریب تھے اور کافی گن گاتے تھے. مگر اس کے بعد میں نتیجہ یہ ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کالج کا انسپیکشن پولیس آفیسروں کے ذریعے ہوا. اگر کوئی غلطی خامی نکلتی اس ادارے میں تو ڈی ایس پی رینک کا آدمی انجینئر پروفیسر کے ساتھ جا کے ایف آئی آر لانچ کرتے تھے. میں بحیثیت جنرل سیکرٹری فیڈریشن فار مائنورٹی انسٹیٹیوشنز ہر 2 مہینے کو ایک خط لکھتا تھا کہ اپوائنٹمنٹ دے، ہم نمائندگی کرنا چاہ رہے ہیں. پورے 10 سال گزر گئے، ایک بار جو ہے ان کو سوائے تصاویر کے جو ہے بالمشافہ دیکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا. He was so arrogant and so negligent about educational institutions. اور یہ ریونت ریڈی صاحب کی حکومت بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کئی مسلم ڈیلیگیشنز کئی بار ان سے مل لیے، اور جو نمائندگی کرے وہ جو ہے یہ خود مثال ہے اس بات کا کہ نمائندگی کرے محمد علی شبیر صاحب کے گڈ آفیسز کے ذریعے، اور سیٹس کئی اداروں کے بڑھ گئے. میں ایکچولی نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے سیٹس نہیں بڑھے، مگر میں بولا کہ have to flow with the group, with the community, and hence I'm here. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے
کہ شبیر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں یا کوئی مسلم ڈیلیگیشن گیا. I hope we make repetitive representations when we face with such hurdles and obstacles, and each time our requests would be answered with a government. And we will have to meet again and again to thank Mr. Revant Reddy for what he's done for the minorities. It's just the beginning. And I hope we stay united. I hope we have good communication between us and the minorities and the minority institutions prosper. Thank you, Shabir Saab. Thank you, Revant Reddy Garu. Thank you, Mehbooba Alam Saab, کہ آپ یہ نشست کا اہتمام کیے اور you have all of us together on the same platform. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now I request Janab Ghaus Sahab, Chairman Azab Group of Institutions, to speak few words. Honorable personalities at the dais and ladies and gentlemen, صرف 2 منٹ جو ہے کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں صاحب کو جو ہے کہ ہمارے جو پرابلمس اب تو ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے، لیکن اصل جو پیٹ میں درد ہمارا ہے وہ صاحب کے سامنے رکھے تو اس کا حل ہوتا بول کے میں سامنے آیا. سب سے بڑا پرابلم صاحب جس وقت میں جو کانگریسی حکومت تھی 2004 سے لے کے 2014 تک، وہ سنہرا دور تھا آندھرا پردیش کے اور تلنگانہ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے لیے، اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنس اسٹیبلش ہوئے وہی دور میں پھلے اور کھلے اور وہیں پہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی. جیسا 2014 آیا، آنے کے بعد میں خاص طور پہ مائنارٹی کالجز ایسے ٹارگٹ کیے گئے اور پورے 55 کالجز جو ہے کہ تباہ ہو گئے اور پورے کالجز کو یہ لوگ بند کر دیے. صاحب لوگ سب سے پہلے کیا کریں، ہمارے کو اسکالرشپ ملتی تھی مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے، وہاں سے کٹ کر کے یہ لوگ سوشل ویلفیئر میں ڈالے. صاحب وہاں آتے ہی جو ہے کہ اسکالرشپ 2-3 سال کے بعد مل رہے تھے تو ہمارا آکسیجن کٹ ہو گیا صاحب وہاں پہ. تو آج تک جو ہے کہ ایسے پریشانی میں ہے، جو بھی بچا کچا ہے اور جو بھی تھا ساری چیزیں جو ہے کہ بیچ بچا کے اب تک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلا رہے، اور صرف جو ہے کہ تھوڑے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس بچے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو ہے کہ آپ جیسے اس سے پہلے مائنارٹی ڈکلریشن کے اندر بتائے تھے، جیسا حکومت آتے آپ کا سپورٹ رہے گا ڈیفینیٹلی. آپ جو ہے کہ جو بات بولے تھے وہ وعدے پہ آپ جو ہے کہ بالکل آئے ہیں صاحب. اس کا ثبوت ہے جو اس سے پہلے 2 دن کے اندر کئی لوگ کورٹ کو جا رہے یہاں وہاں، 2-3 مہینے سے وہ لوگ کئی پیرویاں کرنے کے باوجود بھی ان کے کالجز کے اندر سیٹس انہینس نہیں ہوئی ہے. صرف آپ کی نمائندگی پہ 2 دن میں جو ہے کہ سب کو بیٹھے جگہ 120 سیٹ آئے صاحب. اس کے لیے ہم آپ کے بے حد جو ہے کہ ہم شکر گزار ہیں صاحب. اور ہم اگر پھرے تو ہمارے اٹینڈر بھی اندر آنے نہیں دیتا صاحب. تو ایسے حالات ہم 10 سال دیکھے اور بہت ہی جو ہے کہ تکلیفوں سے ہم گزرے ہیں. اور آج جو ہے کہ اتنی خوشی ہو رہی کہ پھر سے جو ہے کہ یہ حکومت، یہ مائنارٹیز کی حکومت آئی بول کے ہم لوگ بہت خوش ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس کا ثبوت ہے جو 2 دن پہلے جو جیو آیا ہے، تو یہ جیو جو ہے کہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت مائنارٹیز کی اور مائنارٹیز کی مدد کے لیے آئی ہوئی حکومت بلکہ ہم بالکل بول سکتے. میں اس کے لیے میں آپ کا جو ہے کہ بہت ہی شکر گزار ہوں صاحب. تو سب سے پہلے اس کے علاوہ جو دوسرا جو دوست کا تھا ڈگری کالج میں، 10 سال سے مسلم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ نہیں ملی صاحب ڈگری کالج کے اندر. غریب بچے جو ہے وہ لوگ اپنے پیسے دے کے پڑھے، اور ہمارے جتنے مسلم انسٹیٹیوشنس ہیں پورے غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے، غریب بچوں کو، غریب فیملیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے کہ اسٹیبلش کرے ہوئے ہیں. ناٹ لائک کے وی کے راؤ صاحب بولے 200 400 500 کروڑ ویسے کمانے والے انسٹیٹیوشنس نہیں ہوتے. ہم ایک روپیہ جمع کر کے محنت کر کے وہ پیسے لگا کے ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس آج چلا رہے ہیں صاحب. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہمارے پاس، کسی کے پاس بھی 20 لاکھ سے بڑھ کے گاڑی نہیں ہے صاحب. سب چھوٹے چھوٹے گانے والے ہیں. اور پورے جو ہے کہ اب وہ نان مائنارٹی کالجز دیکھے تو وہ لوگوں کا ٹرن اوور 150 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ ہے، اور وہ لوگوں کا ہر کام ہو جاتا. تو ہم لوگوں کا ویسا نہیں ہے، ہم بالکل غریب بچوں کو پڑھا رہے صاحب. پہلے آپ بھی دیکھیں کہ کاؤنسلنگ میں جب آتے تھے بالکل غریب بچے چپل پہن کے آتے تھے، اور آپ کی نمائندگی سے جو اسکالرشپ ملی وہ اس سے جو ہے کہ آج بچے پڑھ کے کہیں ہیں. اور آپ بھی جو ہے کہ جانتے ہیں فرسٹ بچہ جو فرسٹ اسکالرشپ جو حاصل کرا، سیٹ ملی لیکن اس کو فیس پے کرنے کو نہیں رہا، تو آپ ہی فیس پے کر کے اس کو ڈاکٹر بنائے، اور بہت جو ہے کہ اعلیٰ ڈاکٹر بنا ہوا ہے بچہ ہو، وہ بھی صاحب کے کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہی ہے. تو پورا قصہ صاحب سنا رہے تھے. اور صاحب تو جو ہے ریزرویشن کے چیمپئن ہیں، اور آج تک ریزرویشن برقرار ہے تو صرف اور صرف صاحب کی وجہ سے جو ہے کہ وہ ریزرویشن ہے. تو جو بھی کاوشیں آپ کے ہیں صاحب،
اور آپ کی جو ہے کہ نمائندگی ایسی رہتی صاحب, آگے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا, کام ہمارا ہو جاتا صاحب. تو اس سے پہلے ہمارے 35 مائنارٹی کالجز کا اسٹیٹس نکل گیا, تو صبح میں گیا تو شام کے 4 بجے تک بحال ہو گیا صاحب. تو ایسی نمائندگی آپ کی رہتی ہے, اور آج بھی جو ہے کہ واقعی قابل تعریف ہے جس طریقے سے آپ جو ہے کہ ہمارے کو جو سیٹس وہ دلائے ہیں. تو یہ آخری میں جو ہے صاحب اب ہم تو سیٹس وغیرہ آ گئے, اور کالج میں بچے بھی جو ہے کہ ایڈمیشن لے رہے ہیں, اور بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم لوگوں کا آکسیجن ہونا ہے صاحب, تو وہ بھی جو ہے کہ آپ ہی کر سکتے. تو مائنارٹی کالجز کا جو اسکالرشپ کا انکم ہے 100-150 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے صاحب, 100-150 کروڑ کے اندر ہی ہے. ایک نان مائنارٹی کالج کی جو فیس ہے وہ فیس کا ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پورے مائنارٹی کالج کو برابر ہوتا ہے. تو آپ کو ایک ایسی تدبیر نکال کے سی ایم صاحب کے سامنے اگر ہمارا ریکویسٹ, اور ویسے بھی جو ہے کہ اپائنٹمنٹ صاحب دلاتے بولے سی ایم صاحب سے ملنے کے لیے, تو وہاں پہ اگر آپ کے صدارت میں نمائندگی اگر ہوئی تو ایک 50-60 کروڑ 100 کروڑ بھی اگر آ گئے تو ہمارے کالجز پورے ٹھہر جاتے صاحب. تو یہ 2-4 پوائنٹس جو ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا. تھینک یو سر. شکریہ غوث صاحب. نو آئی ریکویسٹ جناب شاہ عالم رسول خان صاحب, چیئرمین شادہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز ٹو پلیز. نواب محبوب عالم خان صاحب, سیکریٹری اموالوم ایجوکیشن ایسوسیشن, جناب کبیر علی صاحب, ایڈوائزر گورنمنٹ آف تلنگانہ SC/ST مائنورٹیز, نواب مجاہد عالم خان صاحب, جوائنٹ سیکریٹری اموالوم ایجوکیشن ایسوسیشن, جناب ظفر جاوید صاحب, سیکریٹری سلطان علوم ایجوکیشن سوسائٹی, جناب غوث صاحب, سیکریٹری آزاد ایجوکیشنل سوسائٹی, ڈسٹنگوش گیسٹ, اے ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. سب سے پہلے تو میں نواب محبوب عالم خان صاحب اور نواب مجاہد عالم خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس فنکشن کو آرگنائز کرنے کے لیے. ان آنر آف جناب شبیر علی صاحب, سب سے پہلے تو میں نواب محبوب عالم خان صاحب اور مجاہد عالم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یہاں پر بلانے کے لیے. اور چند چیزیں جو پچھلے ہم 10 سال سے میں بہت قریب رہا ہوں نواب محبوب عالم خان صاحب اور مجاہد عالم خان صاحب کے, اور پچھلے 10 سال سے ہم جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, اور آج مائنورٹی انجینئرنگ کالجز کا اگر وجود عمل میں ہے تو وہ صرف محبوب عالم خان صاحب کی وجہ سے. آپ جان کر خوش ہوں گے کہ 2014 میں تلنگانہ بنا. ہم سب خوش تھے کہ تلنگانہ فارم ہوا, KCR صاحب CM بنے, اور کالجز کا ایک اچھا سسٹم بن کر کالجز چلیں گے. جون میں تلنگانہ فارم ہوا, اگست میں جب انجینئرنگ کی کاؤنسلنگ آئی تو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ہندوستان میں کہیں نہیں ہوا جو حیدرآباد تلنگانہ میں ہوا. 174 انجینئرنگ کالجز کو بند کر دیا راتوں رات. دنیا میں کہیں نہیں ہوا جو تلنگانہ حیدرآباد میں ہوا. 174 انجینئرنگ کالجز کا ایفیلیشن روک دیے. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ سے آرڈر آیا, وہ ہائی کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر ہم ڈویژن بینچ گئے, وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا, کاؤنسلنگ چلتے رہی. تو مجھے اچھا یاد ہے ہم یہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, بلائے بڑے بابا بلا کر بولے کہ تیاری کرو سپریم کورٹ جانے کی. تو آپ سن کر خوش ہوں گے کہ میں, میرے بھائی مجاہد عالم خان صاحب اور چند مائنورٹی انجینئرنگ کالجز کے چیئرمین صاحب مل کر دلی گئے, اور دلی میں سپریم کورٹ میں آرڈر ہم کیس فائل کرے. 3 مہینے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چلتے رہی. دسہرہ کی چھٹیاں آ گئے, سپتمبر اکتوبر میں ڈیلے ہو گیا. نومبر میں جو یہ 3 مہینے کا جو پروسیس رہا, اس میں آپ جان کر خوش ہوں گے کہ انڈیا کے ون آف دی بیسٹ لائرز کو ہم ہائر کریں, جس کی ایک ایک ہیئرنگ کی فیس لاکھوں روپے تھی.
कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, ऐसे लॉयर्स को हम रखे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम केस जीते और हिस्ट्री में काउंसलिंग के 4 महीने के बाद भी फिर रीशेड्यूल हुई काउंसलिंग और नवंबर में काउंसलिंग हुई और जो कॉलेजेस को 174 कॉलेजेस को रोक दिए थे वो पूरों को काउंसलिंग में ऐड करना पड़ा। तो मैं समझता हूं इसका क्रेडिट तो सबको जाता है, मगर खास इसके पीछे जिसकी फॉलो था और जिसका वो था हमको इंस्ट्रक्शंस के जाओ ये करो, वो महबूब आलम खान साहब थे। ये मसला अभी खत्म ही नहीं हुआ, हम परेशान है 2014 से 15-16 से दोस्त ऑनलाइन का एक प्रोसीजर लाई गवर्नमेंट। मुझे अच्छा याद है रंजीव आचार्य मैडम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे, उन्होंने मीटिंग कॉल फॉर करके पूरे माइनॉरिटी कॉलेजेस को बुलाए और बोले कि आपको अब दोस्त हम ऑनलाइन सिस्टम ला रहे, आप पूरे अपने कॉलेजेस को इंक्लूड कर देना। तो महबूब आलम साहब भी थे मीटिंग में, बोले मैडम यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट TMA जजमेंट, यू कैनॉट इंटरफियर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड इफ यू डू सो वी विल गो टू कोर्ट और हम स्ट्रक डाउन कर देंगे। तो मैडम को गुस्सा आया, उन्होंने बोले हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। तो बड़े बाबा को भी गुस्सा आया, बोले हम आपको भी नहीं मानते, आपके ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे और हम हाई कोर्ट जाएंगे और उसको स्टे कर देंगे। तो अभी मीटिंग खत्म ही नहीं हुई थी, हाई कोर्ट में मैटर आया और एक हियरिंग में जज जो है उसको स्टे कर दिया। तो फिर हम रंजीव आचार्य मैडम को बोले कि आप ये नको करिए, इससे गवर्नमेंट को बैड नेम जाएगा, आप काउंसलिंग में इंक्लूड मत करिए और ये चीज छोड़ दीजिए, ये हमको परमिसिबल है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हम खुद रन कर सकते। तो उन्होंने भी जिद पे है। उसके बाद फिर एक रिप्रेजेंटेशन हम लेके बड़े बाबा की सरपरस्ती में सीएम साहब के पास गए। सीएम साहब कड़ियम श्रीहरि जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको बुला के बोले भाई आप एग्जाम कर दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो 5 साल 6 साल से हमको हर साल एक मेमो दिया जा रहा है, जियो नहीं, मेमो दिया जा रहा है ये बोलकर कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दोस ऑनलाइन एडमिशंस। मगर उसका डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि जो बच्चे एडमिशंस ले रहे ऑफलाइन उनको स्कॉलरशिप नहीं आ रही। तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स में ये बेचैनी है कि अगर हम इनके पास डायरेक्ट जाएंगे तो हमको स्कॉलरशिप नहीं आएगी और दोस्त ऑफलाइन प्रीफर कर रहे हैं वो लोग। जो दोस्त ऑफलाइन में हमारे कॉलेजेस नहीं है, माइनॉरिटीज जो भी है, तो हम चाहते हैं कि मोहम्मद अली शबीर साहब इसमें इंटरवीन करें और हमको जियो अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप सुनकर खुश होंगे कि ये तो केसीआर साहब की 10 साल की हुकूमत के बारे में मैं सुना रहा था। शबीर अली साहब से हमारे वालिद के मरहूम पिछले 40 साल से ताल्लुका थे। हमारे लिए शबीर भाई हमारे सरपरस्त थे। कांग्रेस हुकूमत 2024 में बनी, मैं शबीर साहब के घर को गया, मुबारकबादी दिया और एक मेरी फाइल पेंडिंग थी, मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि शबीर भाई ये मैं मेरे मरहूम वालिद के नाम से एक लॉ कॉलेज खोलना चाह रहा हूं। तो जिसका बार काउंसिल से भी हमको परमिशन मिल गया, अब जियो अवेटिंग है। तो 1 हफ्ते के अंदर मोहम्मद अली शबीर साहब को जियो दिला दिए। मैं मशकूर हूं, ममनून हूं मोहम्मद अली शबीर साहब का कि प्रोसेस जल्दी कराए और 10 दिन में फाइल मेरी सेक्रेटेरिएट से, हायर एजुकेशन से, फाइनेंस से सब क्लियर होकर हमको जियो मिला और इंशाअल्लाह ताला हम मेरे मरहूम वालिद के नाम से इस साल लॉ कॉलेज स्टार्ट करेंगे। और ऐसे कई चीजें हैं जो शबीर साहब के पास हम बेझिझक चले आते हैं, आधी रात को जाते हैं। और इंजीनियरिंग का परसों जो एक पॉलिटिकल लिस्ट आउट हुई थी 20-21 कॉलेज की सीट्स एनहेंस की, तो मैं रात में फोन करा शबीर भाई को, तो बोले आप कल सुबह आ जाना, रिप्रेजेंटेशन बना के आना।
تو ہم صبح ریپریزنٹیشن بنا کے شبیر بھائی کے پاس گئے تو میرے سامنے جو دوسرے ایڈوائزر ہے ویم نریندر ریڈی صاحب کو فون کر کے بولے کہ آپ جو کریں وہ غلط کریں, مائنورٹیز کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, اور یہ جو آپ دوسرے کالجز کو انکلوڈ نہیں کریں ان کو امیڈیٹلی انکلوڈ کرنا. اور شبیر صاحب کے فالو اپ پہ وہ پورے کالجز انکلوڈ ہوئے اور پورے کالجز کو ایڈیشنل سیٹس ملے, جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت دے اور لمبی عمر دے. میں پھر ایک بار جناب مجاہد عالم خان صاحب کا اور محبوب عالم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر بلائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ خان صاحب. اب میں ادباً التماس کرتا ہوں آج کے مہمان خصوصی جناب محمد علی شبیر صاحب, ایڈوائزر گورنمنٹ آف تلنگانہ, کہ وہ اپنے خیالات سے ہم سب کو محسوس کریں. آج کے اس قوم کی بلڈنگ یعنی قوم کو کس طریقے سے آج کے چیلنجز پہ بنانے کے لیے یہ انٹریکشن سبھا کے صدر عالی جناب نواب محبوب عالم خان صاحب, میرے ساتھی ظفر جاوید صاحب, شاہ عالم جی, مجاہد عالم خان, غوث صاحب, چیئرمین آف دلولا کالج کے وی راؤ جی, بادشاہ محی الدین جی, اور بھی بہت سارے انجینئرنگ کالجز کے یہاں پر انتظامیہ یا اس کے بورڈ کے چیئرمینس, پروفیسر رمنا جی, میڈیا کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, میڈیا کے ساتھیوں, ہمارے کانگریس کے بھی آرگنائزرس آئے ہوئے ہیں, ان کا سب کا یہاں پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گورنمنٹ پہلے سے کہتی ہے کہ کانگریس پارٹی جبھی بھی تھی یہ مائنارٹی کی دوست حکومت ہے. مائنارٹی کو اپلفٹنگ کرنے کا ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ مسلمان بھی یا کرسچن بھائی بھی یا ادر ہمارے بی سی یا دلت بھائی جو پچھڑے ہیں وہ تمام سب کے ساتھ بھاگے, تبھی سب کا وکاس, سب کا وشواس ہوتا ہے. لیکن خالی ہم سلوگن دیتے ہیں کہ سب کا وکاس, سب کا وشواس, لیکن عمل نہیں ہوتا ہے. جب 2004 میں ہماری سرکار بنی, راجشیکھر سی ایم بنے, 56 ڈیز کے اندر کانگریس حکومت نے 5% مسلم ریزرویشن کوٹا کا عمل میں آیا. صرف ایجوکیشن میں نہیں, ایجوکیشن, امپلائمنٹ اینڈ لوکل باڈی سلیکشن میں بھی ہم نے 5% دیا. لیکن سنگھ پریوار کے لوگوں نے اس کو چیلنج کیا, ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ, پھر اس کے بعد 5 ججز ہیڈڈ بائی دی چیف تھے جسٹس سدرشن ریڈی صاحب کے بینچ پہ. گورنمنٹ کے اگینسٹ میں مقابلہ ہوا, لیکن گورنمنٹ ہار گئی, کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ مسلمانوں کو مسلم کے نام مذہب کے بولے بغیر سوشلی ایڈوکیشنلی بیکورڈ مسلمس اگر ہیں ان کو ریزرویشن دے سکتے ہیں, مگر 3 کنڈیشن لگایا. کہ کنڈیشن نمبر 1 کہ ناؤ ریزرویشن اسٹیٹ میں 46% ہے, لیکن 5 آپ دینے سے 51 ہو گیا. 51 ہونے سے اندرا ساہنی ججمنٹ جو 11 ججز کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ نے بار لگا دیا کہ 50% سے ریزرویشن نہیں بڑھنا ہے ٹوٹل انڈیا میں. کوئی بھی اسٹیٹ ہو ود ان دی 50% وہ نیچے اوپر کر لو, ایس سی ایس ٹی بی سی مائنورٹی بڑھا لو, کم کر لو, لیکن ابو دی 50% نہیں کر سکتے. تم نے وائلیٹ کرے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو, لہذا آپ کا سٹک ڈاؤن کر رہے ہیں ہمارا جیو 33. پھر سیکنڈ بولے کہ مائنارٹی کمیشن, بی سی کمیشن کے رپورٹ کے بغیر آپ بی سی ای کیٹیگری میں کیسے لاتے ہیں, آپ بی سی کمیشن کا رپورٹ لے کے آؤ. نمبر 3 اس کے اندر یہ تھا کہ جب تک تم لوگ مذہب کا نام لیں گے تو ریزرویشن نہیں چلے گا. مذہب کا نام مطلب ان کی بیکورڈنیس کا ہم کو سروے کر کے بیکورڈنیس بتاؤ,
ये 3 कंडीशन लेके आओ। हमने 3 कंडीशन लाने में 1 साल लग गया, तो 2004 और 5 में दिए, 5 और 6 नहीं दिए, फिर 6 और 7 में रिजर्वेशन शुरू हुआ। 5 को 4 करे, 4 करने से 46 + 4 50 हो गया। तो इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट के बार से हम लोग बाहर आ गए, नंबर 1। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम पहले लगाए थे मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा, उसका नाम बदल दिए। उसके बाद रखे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रिजर्वेशन कोटा, नाम बदल दिए। फिर इसके बाद कास्ट के साथ उन्होंने कहा कि भाई इसको बताओ कि जिसको भी रिजर्वेशन देने चाह रहे हैं उनका बैकवर्डनेस कैसे बता सकते हैं। तो उसमें हमने जैसे कि पत्थर फोड़ने वाले हैं, हम तो संग तराश करते मगर एक्चुअल पत्थर फोड़ने वाले हैं, तो पत्थर फोड़ने वाले मुसलमान, सांपों को लेके नचा के अपना पेट भरने वाले मुसलमान, रीचों से अपना खेल खिला के पेट भरने वाले, उसी तरीके से धोबी, हज्जाम, खसाब, गसाल, खलेगर, मच्छी पकड़ने वाला, ऐसे कई 22 तबकात को हमने आइडेंटिफाई करे कि देखो गुर्बत का अंदाज ये है। उसके बाद एक शेख को भी इसमें इंक्लूड कर दिए। शेख का इंक्लूड होना ही हमारे रिजर्वेशन की कामयाबी है, क्योंकि 70% शेख है, बाकी का अगर ऑल कम्युनिटी से मिलाए तो 10% होते, जिसमें हमने एक्सक्लूड किसको कर दिए वो भी पूछा है। बोले भाई हम सैयद को निकाल दिए, मुगल, अरब, ईरानी, पठान, नवायर या इस्माइलिया, बोरा, ये सबको हम निकाल दिए, बताए। तो वो लिस्ट बोले अरे बड़ी लिस्ट में बहुजनों को निकाल दिए, लेकिन एक्चुअल सैयद को और पठान को, ये 2 जनों में से थोड़ा नुकसान हुआ है। उनको हम कहेंगे भाई बाद में पीछे के दरवाजे से या खिड़की से फिर अंदर ले लेंगे, फिलहाल तो ये रिजर्वेशन को कामयाब कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 18-19 साल से ये कामयाब रिजर्वेशन चल रहा है। आज 22 लाख बच्चे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बैठे हैं। लास्ट ईयर हमारे शाह आलम ने मुझे भिजाए थे रिकॉर्ड कि 1124 MBBS स्टूडेंट आपके ग्रुप पे में सेलेक्ट हुए, 1124, और उसमें मुबारकबाद है हमारी लड़कियों का। यहाँ भी लड़कियों की तादाद ही ज्यादा दिख रही, तालीम में भी ज्यादा उनका ही मेजॉरिटी है। 1124 में 700 गर्ल्स है, ओनली 424 बॉयज है। और अगर BDS में गए तो 324 सीट्स है, 354 में 300 गर्ल्स है, ओनली 54 बॉयज है। चलिए गर्ल्स और बॉयज हो, लेकिन ये तालीमी इनकलाब हमारे साथ आया। तो जब 2014 की सरकार आने के बाद लोगों ने बहुत आस लगाए थे कि तेलंगाना बनने के बाद उसकी मंजर कशी बहुत अच्छे तरीके से हमारे शाह आलम ने करे और जफर जावेद ने भी कर बताए कि समझे कि मुसलमान कॉलेजों को और क्रिश्चियन कॉलेजों को हिम्मत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 170 कुछ उन्होंने बताए, मेरे पास भी कॉलेजेस के सीट्स है कि मुकम्मल तौर पर 22 इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज 22 बंद कर दिया गया। वो भी अजला में जो थे, मैनाबाद में है, चवड़ला में है, नलगुंडा में है, बोधन में है और महबूबनगर में है, ऐसे कई डिस्ट्रिक्टों में से सब कॉलेजेस की लिस्ट भी मेरे पास है, मैं बाद में मीडिया को भी देता हूँ कि बंद कर दिया गया। जब असेंबली में क्वेश्चन हुआ, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, CM साहब लीडर ऑफ द हाउस से, हम दोनों का मुकाबला हुआ बातचीत के जरिए। उन्होंने कहा कि शब्बीर साहब आप लोगों ने क्या कॉलेजा दिए हैं। मैं बोला साहब आप इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तुम लोगों ने पोल्ट्री फार्म में कॉलेज दिया है, तुमने डेयरी फार्म में कॉलेज दिया है। मैं बोला साहब जरा सुनो, ऐसा इल्जाम मत लगाओ, ये गवर्नमेंट ही नहीं, इसके ऊपर AICTE है और कई एजेंसियां हैं, वो लोग पूरा मिलके देख के कॉलेजा देते हैं। आप उठा के बोल दे रहे कि डेयरी फार्म में, अगर कहीं एक डेयरी फार्म में है तो बंद करो। ये पुलिस को लेके कॉलेज जाके क्यों बंद कर रहे हो आप? क्या चोर है वो लोग इतना नोबल पेशा अख्तियार किए कि इसके कौम को बिल्ड करने का पेशा बनाए। वो लोग अभी सिनेमा थिएटर या कोई इंडस्ट्री डालते तो क्या करते थे? ये कॉलेजेस नहीं लगाते तो फिर ये हमारे नई नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल पैदा कहाँ से होगी? और खास तौर पर मुसलमानों में जो सचर कमेटी कहती है कि सबसे एजुकेशन में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी मुस्लिम है, तो फिर कौन उनको पढ़ाएगा?
बोलते उठ के बोले अरे शब्बीर साहब मेरा दुबई का दोस्त आया था, उन्हें कह रहा था कि वो ऑटो में सफर कर रहे तो पूछे ऑटो ड्राइवर कि तुम कौन है, बोले कहाँ तक पढ़े, इंजीनियर है। अरे इंजीनियर है कि तुम ऑटो चला रहे। ये तो था शब्बीर साहब तुम्हारी कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड कि तुम्हारे बच्चे नाम के सर्टिफिकेट लेके इंजीनियर बने लेकिन किसी के पास क्वालिटी नहीं है। बोला मैं बोला ऐसा बड़ा इल्जाम मत लगाओ। बेशक आज़ादी से पहले से भी हमारे अपर क्लास के लोग वो आगे जा रहे हैं, वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं। ये उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हुआ उसको इसको फर्क होता है साहब, इसको 1 जनरेशन का गैप होना पड़ता, 20 साल का गैप दो, उसके बाद बताते हैं हमारे बच्चों की क्या ताकत है, हमारे इल्म और जहन कितना आगे बढ़ सकता है बताते हैं, मगर आप ऐसा इल्जाम मत दो। थोड़ा उन्होंने डर गए, डर के एकदम बोलने को तो नहीं शब्बीर साहब मुझे बोलने का मतलब ये नहीं था कि क्वालिटी नहीं है, मतलब क्वालिटी आएंगी। उन्हें पैदा होके 70 साल से हायर एजुकेशन में टॉप स्कूलों में पढ़ रहा, उन्हें सरकारी स्कूल से अब आया, उन्हें पैदा होते भागो तो भागता कैसा। ये असेंबली को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सवाल जवाब, ये कोई कहानी है कुछ नहीं, जस्ट ऑन रिकॉर्ड। कभी भी आप असेंबली में हाउस का उसमें गए तो आपको ऑनलाइन में भी मिल सकता। तो मैंने सीएम को कहा कि साहब ये बच्चा पैदा हुआ रिजर्वेशन से, इसको भागो बोलो तो कैसा भागेगा, उसको पहले उठेगा बैठेगा रेगेगा फिर भागेगा, इतना से मिले 20 साल लगते इसके लिए। अब उन्होंने बोले अरे किधर की किधर चलेगा, ये मौसम का रंग हो जा रहा बोल के एकदम बैठ गए वापस। तो इस तरीके से हमको फाइट करना पड़ा इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को या मेडिकल कॉलेजों को बचाने के लिए। तो हमारी यही हमेशा यही थी कि मैं जब पहले 2004 में मिनिस्टर के साथ सीएम की मेरी पहली राष्ट्रीयता में बोला साहब हमारे इस्लाम के अंदर हमारी मुक़द्दस कुरान की पहली आयत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह जल्ले जलाओ किताब जब आयत भिजाए तो नमाज रोज़ा ज़कात या खाने काबा की ज़ियारत ये सब नहीं है, भिजाए इल्म इक़रा बिस्म कवने पढ़ो, ये भिजाए। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने पहले मुक़द्दस कुरान के ज़रिए इल्म को भिजाया। तो इल्म भी कितनी बड़ी अहमियत है, और वो इल्म को फैलाने का काम आप इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इल्म फैलाने का काम अल्लाह जल्ले जलालहू ने जो कुरान के जरिए भेजा है वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके 3-4 मसाइल हैं। पहला तो ये कह रहा हूँ कि सरकार आपकी है, आप बेधड़क आइए, आपके जो भी मसाइल है उसको हम पूरे तरीके से हल करके जितना हो सके और माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करें। मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के। यहाँ पर बिशप हमारे लॉयला कॉलेज के चेयरमैन साहब आए कि साहब हमको लॉयला कॉलेज और अकेडमी को सो एंड सो कॉलेजेस को नहीं मिल रहा। मैंने विद इन 1 वीक के अंदर सारे कॉलेजेस के उनके उसको कंप्लीट करके भेजा के बोला डरो मत, कांग्रेस की सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये मुस्लिम क्रिश्चियन दलित के वोटों से बनी हुई सरकार है, आपको बिल्कुल सिर्फ बड़े लोगों की नहीं है। जैसा कि केवी राव साहब ने हमारे बता रहे कि ये लोग 300-400 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन कैसा लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बोले केवी राव जी। आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी समय मिला आप मुझे थोड़ा ब्रीफ करिए। ऐसा दिख रहा है कि आप पूरे ये इंसाइक्लोपीडिया है पूरा, ये क्या क्या स्कैंडल्स हो रहे, क्या हो रहा है, थोड़ा मेरे को भी ब्रीफ करिए तो मैं भी आगे सीएम साहब के सामने पेश करूंगा। और आप लोगों ने कहा जो अच्छा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैठकर कोई अच्छा काम करते कोई सहाबी तो शुक्रिया अदा करते थे, ये बुरी बात नहीं है। तो आज महबूब आलम खान साहब के सदारत में और कॉलेजेस के ये तमाम एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दी तेलंगाना का भी ये एक अच्छा इक़दाम है कि जो रेवंत रेड्डी साहब ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि जितने माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे 120 सीटें बढ़ा लो जाओ, 1, 2, 3 नहीं। मैं एक्चुअल कुछ ही रिप्रेजेंटेशन आए थे भिजाया तो उन्होंने बोले शबीर भाई कहीं को 1, 2 पूरे ले लो, जितने इंजीनियरिंग वाले जो लेना चाह रहे ले लो। चल ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर शायद ही कभी मिला होगा कि 1 साइड आप लोगों को परमिशन हम दिए ये कर लो। इसी तरीके से वो भी एक मसला बोले कि दोस्त का स्कीम का
मैंने दोस्त से तो निकालने लगा, लेकिन एक अच्छी बात अब मालूम हुई मुझे कि जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन में कि स्कॉलरशिप जो है इसमें हमारे बच्चों को नहीं आ रही, जिससे ऑनलाइन में यानी ऑफलाइन हो जाने के बाद दोस्त से माइनॉरिटीज को तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लूड हो गए वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल सक रहा। जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा हुकूमत के सामने ये तमाम चीज़ ज़रा मुझे सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं उनको भी इंक्लूड करके ये जिस तरीके से दोस्त स्कीम में जो लोग हैं, जो दोस्त से माइनॉरिटीज को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन लोगों का, लिहाजा उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी फीस मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब रहा आपके पुराने ड्यूज है, काफ़ी कॉलेज वाले परेशान हैं। बादशाह मोहिउद्दीन साहब तो बेचारे हमेशा यही कहते हैं कि शब्बीर साहब इतने 22 करोड़ के करीब हमारे फीस रिएम्बर्समेंट वगैरह स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम से सबके ही है। तो मैं जहाँ तक हो सके हमारी इंटरनल डिस्कशन में ये हुआ कि ये 2 लाख रुपए का फार्मर्स का 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और छोटे छोटे होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ज़रूर अप टू 75% तक हम लोग आप लोगों के पुराने ड्यूज जितने हैं उसको क्लियर करके उसके बाद सीएम साहब ने ये कहा कि इसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस वालों को मत सताओ, इनको ग्रीन चैनल में रखो, साल भी हमारे पीछे फिरना नहीं और ये लोग एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को परेशान करना नहीं है, बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोलते कि भाई गवर्नमेंट दी तो हम देंगे ना। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है कि इसको ग्रीन चैनल में रखने का सीएम साहब ने इरादा बना लिया है और नेक्स्ट टाइम ज़रूर, क्योंकि सीएम साहब को मुझे करे हैं, आप लोग बहुत जल्द मैं सीएम साहब से भी टाइम दिलाकर ये 3-4 मसाइल के साथ आप लोगों को इंटरेक्शन मीटिंग में लगाऊंगा। ये बेहतरीन आइडिया है कि इंटरेक्शन होना, कि मालूमात होना कि हमको भी क्या है वे प्रॉब्लम आपके 10 साल पहले क्या थे, आज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम आ रहा, नई दुनिया में नए नई चीज़ें हो रहे, उसको हम इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा तो हम उनके मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं तमाम मुजाहिद आलम से लेकर बहुत बेचैन थे, मुजाहिद आलम, शाह आलम सब लोग के शब्बीर अंकल एक मीटिंग होना है रेवंत रेड्डी साहब का और आपका। मैं बोला शुक्रिया तो छोड़ो, ये वो तो नहीं इंटरेक्शन है, बोलो इंटरेक्शन मीटिंग है तो मैं ज़रूर आता हूँ। अब शुक्रिया क्या 68 में आगे शुक्रिया अदा करते करते लेते लेते वो बहुत तो दूर हो गए, तो इंटरेक्शन है तो मैं बोला ज़रूर आता हूँ। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्या मसाइल है हमारे हमको मालूम होना चाहिए। तो ये 3-4 आप लोग मेरे सामने रखें। और एक नई बात भी हमारे शाह आलम ने कहा, मैं नहीं कहना चाह रहा था, उन्होंने बता दिए कि मैंने सिर्फ 1 वीक के अंदर मुस्लिम लॉ कॉलेज के लिए, क्योंकि लॉ में बड़ा खला पैदा हो गया है, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मेरे को खुद तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब कह रहे थे, अरे शब्बीर साहब तुम ये डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर रहे हो, ठीक है, क्यों वकला पैदा नहीं कर रहे तुम लोग, वकीलों की बहुत कमी, हम ढूंढ रहे तुम लोगों को, अच्छे एडवोकेट नहीं मिल रहे। तो मुझे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, एक निजी दावत में हम मिले थे, तो मुझे कहा कि भाई अरे डॉक्टर इंजीनियर अब बहुत हो गया, अब तुम पहले लॉयर्स को पैदा करो, वकला की ज़रूरत है हम लोगों को। तो उसके ऊपर क्योंकि मरहूम वज़ारत रसूल खान साहब की एक बड़ी एक ही रीति थी, दवाखाने अपोलो में है, मैं मिलने गया, शब्बीर वो मेडिकल कॉलेज क्या हुआ, बोले हाथ में हाथ दो, बोले हाथ दिया मैं, वो क्या होता, मैं रहता नहीं रहता, मगर वो कॉलेजेस होना, यूनिवर्सिटी होना, बच्चों में 25,000 बच्चे पढ़ना मेरे कॉलेजों में। मैं बोला अरे मैं आपकी मिजाज कुर्सी के लिए आया, मैं पहले आपका सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह सेहत दे देगा, कुछ भी होगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, वो ज़िंदगी दिया मौत भी वही लेगा, मुझे कॉलेज चाहिए। तो बताओ कि उनका जो इरादा था, जिसकी वजह से आज 5 मेडिकल कॉलेज चलाने वाले हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है, वो वाहिद फैमिली है जिनके 5 है, शादान, VRK, निमरा और आयान, शाह चालू नहीं हुआ, शायद परमिशन तो मैं नहीं परमिशन तो मैंने 5 मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया, फातिमा 6, तो हमारे राशेकड़ी से लेके हमारे किरण कुमार रेड्डी के हमारे 10 साल में 6 मेडिकल कॉलेज दिया, 6
आप बताओ, आसान बात नहीं है। और 6 मेडिकल कॉलेज के जो भी कैसे दिए, 100% माइनॉरिटीज को फिलअप कर लो। अदर देन केरला एंड कर्नाटका के जीएस में 50% माइनॉरिटीज, 50% नॉन माइनॉरिटीज है, और हमारे जीओ में 100% है। तो बहुत सारी चीजें हुए, अभी बहुत भी करना है। तो लॉ कॉलेज के लिए मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि मरहूम मुजरत रसूल खान साहब के कॉलेज के अंदर, और उस कॉलेज को भी जब भी आप लोग मुझे जिक्र करे थे तस्करा कि शबीर भाई सीएम साहब आना है, कॉलेज इनाग्रेट करना है, अगर आप बोले तो जरूर कोशिश करेंगे कि सीएम साहब को लेकर आकर बताएंगे। क्योंकि क्या होता है, हमारा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जब राजशेखर साहब का वही था कि आप लोग बुलाते रहते, हम लाते रहते थे, हमारे बीच में उनके बीच में जो दूरियां थी खत्म होते हुए करीब होते रहते, हमारे मसाइल पे उनके आगाही होते रहते। हम अगर दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे, दूर होते जाते। तो ये चीजों से हम दूरी हमारे लिए खतरा है, दूर नहीं होना चाहिए। कहीं छोटे मोटे, अभी मौलाना खान साहब बोल रहे थे कि कोई भी चीज निकले तो उसमें फायदा और नुकसान, कुछ कहीं फायदा ज्यादा कहीं नुकसान होता है। 100% बेनिफिट्स कभी भी किसी को भी नहीं होता, कुछ परसेंटेज इधर उधर होता है। तो वो छोटे से परसेंट पे हम नेगेटिव नहीं हो जाना, हम आगे तदबीर बनाना है। जिस तरीके से इस पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, दलित भाई वन साइडेड 95% वोटिंग करे कि जहां इंडिया अलायंस है वहां सारे लोगों को जिताए, नजदीक के करीब आ गए, जिसकी वजह से आप देखें कि मुल्क के अंदर 10 साल के अंदर काफी जेपीसी का हमने डिमांड किया। पहले जेपीसी रफाइल के ऊपर जो जहाज था उसके ऊपर डिमांड करे, 2 महीने बस सड़कों पे फिरे, रोडों पे फिरे, पार्लियामेंट का बैकआउट मन मोदी जी नहीं चुके। फिर उसके बाद आपके हेडनबर्ग के ऊपर, अदानी के ऊपर करे, वो भी 2-3 महीने सारे अपोजिशन बैठे, मोदी जी को चुमटी भी नहीं काटी। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से आज इंडिया अलायंस का एक झटका, आज मोदी जी आसमान से उतर के नीचे आकर ये बोलना पड़ा कि यस जेपीसी के हम दे रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्त मिल गया है। तो ये अपोजिशन की ताकत होती है, ये जमहूरियत की होती है। तो आप लोगों की वोट की ताकत, आपकी यूनिटी से छोटे छोटे जमातों पे भरोसा करे बगैर बड़े जमातों पर, इत्तेहाद के ऊपर भरोसा करे, जिसकी वजह से हम देखें कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये वक्त बिल का गया है। बात लंबी हो गई है, तो मैं ऑल मुस्लिम कॉलेजेस एंड क्रिश्चियंस कॉलेजेस, बीसी एससी सबके लिए मैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। एनी मोमेंट जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो आप लोग आ सकते हैं। गवर्नमेंट आपकी है, आपके वोटों से बनी हुई है, और हम आपके साथ है। आपका वेलफेयर, आपकी तरक्की, ये हुकूमत की तरक्की है। हमारी सोच आपको आगे बढ़ाना है, सबके साथ सबके विकास दूसरों का स्लोगन है, ये हम परमानेंट चाहते हैं। आपका विकास हो और आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की ख्वाहिश है। खुदा हाफिज, जय हिंद। हुक्म इलाही है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान का बदला एहसान से चुकाइए। तो आज तमाम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ तरफ से जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब ये एहसानात का बदला तशक्कुर के लिए जलसे का इत्तेहाद अमल में आया था। आप तमाम की शिरकत के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम जलसे के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। शुक्रिया।